हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका खंजवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो चैनल में पहली बार आ रहे हैं उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम अलका खंजवाल। द चैनल इज एन एजुकेशनल चैनल वेर इन जनरली हम लोग कंप्यूटर और मैथमेटिक्स, चाहे रीजनिंग हो, तो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स की तैयारी कराते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एग्जाम्स। सो यू कैन ऑल्सो गिव मी द फीडबैक कि ये एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा देना चाहिए, मुझको एक सीरीज बना देनी चाहिए। So the suggestions are always welcome. So today we will be talking about DSSSB TGT and PGT Computer Science. I have no idea right now कि एग्जाम कब तक होंगे, मगर तैयारी जो है कि चलती रहनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जब डेट आएगा और उसके बाद हम लोग किताब निकाल रहे हैं, सो इट विल बी वेरी लेट देन। तो इसीलिए इसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अभी हम लोग ने नेटवर्किंग खत्म कर ली है। नाउ वी आर डूइंग, और जो पिछला सेशन था वो सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने एक सेक्शन प्रिपेयर कराया था। तो आज ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और थोड़े डिफिकल्ट लेवल हाई होगी, बिकॉज वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड वन लेवल हाई जो एग्जाम आएगा, ताकि कि जो आएगा वो बहुत इजी लगे हमको अगर हमने अच्छे से तैयारी की है। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। टुडे वी विल बी डूइंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स और बहुत इंपॉर्टेंट 50 MCQ, sorry, it is 50 MCQs on this topic. So here we go, let us get started. What is the main function of the command interpreter? Command interpreter का main function क्या होता है? To provide the interface between the API and the application program, to handle the files in the operating system, to get and execute the next user specified command. तो जी हाँ, option C, that is to get and execute the next user specified command is the function of the command interpreter. So इसका आंसर है option C. Side by side आप notes बनाते रहना, और that is very very important. Now to access the service, operating system की services को access करने के लिए वो इंटरफेस कौन प्रोवाइड करता है? तो इंटरफेस इज प्रोवाइडेड बाय ऑप्शन बी, दैट इज सिस्टम कॉल्स. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज सिस्टम कॉल्स. ठीक है. सीपीयू, जो सीपीयू शेड्यूलिंग होती है वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन बेसिस है? दैट इज द मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां पे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं हमारे मेमोरीज में, मल्टीपल प्रोग्राम्स आर बीइंग एग्जीक्यूटेड. तो सीपीयू शेड्यूलिंग उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. सो दैट इज द आंसर. जो FCFS एल्गोरिदम है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम, वो पर्टिकुलरली किसके लिए ट्रबलसम होता है? जो कि टाइम शेयरिंग सिस्टम्स के लिए ट्रबलसम हो सकता है. ठीक है. तो टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए जो राउंड रॉबिन एल्गोरिदम है वो सबसे बेस्ट है. ओके. एंड FCFS वो उसके लिए बेहतर नहीं है. A deadlock avoidance algorithm dynamically examines the dash to ensure that a circular wait condition can never exist. तो deadlock avoidance algorithm क्या चेक करता है? एक स्टेट होता है, रिसोर्स एलोकेशन स्टेट, ताकि कि सर्कुलर वेट कंडीशन तो नहीं आ गई है, तो वो रिसोर्स एलोकेशन स्टेट होता है. इज इट फाइन? ओ सॉरी, ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन स्टेट हो गया. आगे बढ़ते हैं. The operating system and the other processes are protected from being modified by an already running process. क्यों operating system और other processes are being protected? Option A, every address generated by the CPU is being checked against the relocation and the limit register. They have a protection algorithm. They are in different memory spaces. They are in different logical addresses. So answer है option A. Every address generated by the CPU is being checked against the relocation and the लिमिट रजिस्टर. तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है. टू ऑब्टेन बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन, एक टेक्निक यूज होती है डायनामिक लोडिंग की. इसमें क्या होता है? रूटीन इज नॉट लोडेड. वो रूटीन तब तक लोड नहीं की जाती है जब तक उसको कॉल नहीं किया जाता है. तो जब हम डायनेमिक लोडिंग करते हैं तो क्या हमको कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम से स्पेशल सपोर्ट चाहिए या कुछ हार्डवेयर की सपोर्ट चाहिए? तो ऐसा कुछ नहीं है. यूजर प्रोग्राम्स कैन इंप्लीमेंट डायनेमिक लोडिंग विदाउट एनी स्पेशल सपोर्ट फ्रॉम हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम. तो आंसर है ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इसका सही आंसर है. ओके, इज इट फाइन? आगे बढ़े. अगर आपको डिटेल में अगर
चाहिए एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अलग से पूरा सेशन हो जिसमें कर्नल के बारे में एक्सप्लेन किया गया हो, टॉपिक वाइज चाहिए तो डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, बट वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा कि मैं एक एक कर्नल के बारे में समझा रही हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों का लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मिड टर्म शेड्यूलर कैसे स्वैपिंग में हेल्प करता है इसके बारे में बता रही हूँ। तो डेफिनेटली अगर आपको चाहिए तो मुझे जरूर बताना। So operating system keeps a small table which is containing information all the open files, that is known as the open file table. तो आंसर है ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर है। इज इट फाइन? On systems where there are multiple operating system, ठीक है, the decision to keep a particular one is done by, तो the decision कि to load a particular one कौन करेगा? bootstrap करेगा। So option D इसका करेक्ट आंसर है, bootstrap। Is it fine? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। द 2 steps the operating system takes to use a disk to hold its file are dash: catching and logical formatting and swap, space creation, swap space creation and catching, partition and logical formatting। तो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर, पार्टीशनिंग और लॉजिकल फॉर्मेटिंग किया जाता है। ओके, सो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। The dash program initializes all the aspects of the system from CPU to device controller, content of the main memory, and then starts the operating system. तो ये भी bootstrap का ही काम है, bootstrap closure. So yes, the answer is option this ना, bootstrap। अब आगे हम करते हैं what are the different types of operating system, types of distributed operating, zone based operating system, level based operating system, network operating system, all of the above। तो आंसर है network operating system, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। Is it fine? Which facility dynamically adds probes to a running system both in user process and the kernel? तो उस प्रोग्राम का है dtrace। तो डी ट्रेस करता है ये काम जिसमें प्रोब्स ऐड किए जाते हैं। तो आंसर है डी ट्रेस। इज इट फाइन? मूविंग अहेड, लेट्स मूव अहेड। व्हाट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन? क्या होता है? कम्युनिकेशन विद इन द प्रोसेस होता है, या कम्युनिकेशन बिटवीन 2 प्रोसेसेस होता है, या कम्युनिकेशन बिटवीन टू थ्रेड्स ऑफ द सेम प्रोसेस होता है। तो आंसर है कम्युनिकेशन बिटवीन 2 प्रोसेसेस। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बिटवीन 2 प्रोसेसेस ये कम्युनिकेशन है। आगे बढ़े। Which system call can be used by a parent process to determine the termination of a child? तो उसके लिए wait होता है। wait system call can be used by the parent to determine the termination of the child। तो आंसर है ऑप्शन ए, that is wait। ठीक है। A process control block does not contain which of the following? तो process control block में कोड भी होता है, स्टैक भी होता है, डेटा भी होता है, बट बूटस्ट्रैप प्रोग्राम नहीं होता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो यस, द नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, द नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट थ्रूपुट। तो आंसर है ऑप्शन सी, तो ऑप्शन बी, दैट इज थ्रूपुट। व्हाट इज अ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक? क्या है वो? प्रोसेस टाइप वेरिएबल है, एक डेटा स्ट्रक्चर है, या एक सेकेंडरी स्टोरेज लोकेशन है, या ब्लॉक इन द मेमोरी है? तो वो एक डेटा स्ट्रक्चर है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बहुत बारीकी से ढूंढे हुए क्वेश्चंस है, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग? द नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूटेड पर टाइम, द नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन द रेडी क्यू, द नंबर ऑफ द प्रोसेस इन द इनपुट आउटपुट क्यू, एंड द नंबर ऑफ द प्रोसेसेस इन द मेमोरी। व्हाट इज इट? What is the degree of multi-programming? That is the number of the processes in the memory. Multi-programming, the number of processes in the memory. So option D is the correct answer to the question. And we are having what is a long-term scheduler. Long-term scheduler क्या करता है? It selects the processes which have to be brought. मतलब कौन से processes को ready queue में लाना है, उसको लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ही काम करता है। मतलब कौन से प्रोसेस को रेडी क्यू में लाना चाहिए। सो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, इफ ऑल द प्रोसेसेस इनपुट आउटपुट बाउंड, इफ इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस ज्यादा है तो रेडी क्यू विल ऑलमोस्ट बी
एमटी ही होगा अगर इनपुट आउटपुट पे ज्यादा उनको काम है, एंड शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का भी काम कम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, एमटी और ऑप्शन सी लिटिल। ठीक है, लिटिल टू डू ना, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम घट जाएगा। अब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जिसको नहीं पता है वो क्या है, it allocates which process has to be executed next। अब किसकी बारी है, नेक्स्ट किसकी बारी है, वो सिलेक्ट करता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ज्यादा बिजी रहता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर से। ठीक है, अब है हमारा the only state which can be initiated by the user process itself is block। ब्लॉक है जो कि यूजर प्रोसेस से इनिशिएट हो सकता है, दैट इज द ब्लॉक सिस्टम कॉल। In a time sharing operating system, when the time slot which is given to a process is completed, then the process goes from the running state to the ready state। तो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर, रेडी स्टेट चला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये सब क्वेश्चन। इन अ मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, इफ द प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स मोर देन वन प्रोसेस एट अ टाइम, द प्रोग्राम्स आर डेवलप्ड बाय मोर देन, नहीं, मोर देन वन प्रोसेस रिसाइड्स इन द मेमोरी। तो क्या है मल्टी प्रोग्रामिंग, क्या है, ऑब्वियसली मोर देन वन प्रोसेसेस। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन था ना, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग की नंबर ऑफ प्रोसेस रिसाइडिंग इन द मेमोरी, तो वही लॉजिक है इसमें। Suppose that a process is in the block state waiting for some input output service. When the service is completed, it goes to the ready state। So yes, option B is the correct answer होगा। So option B is the correct answer। Moving ahead, the context of the process in the PCB of a process does not contain the value of the CPU register, the process state, the memory management information। So I think the answer has to be option D, that is the context switch time नहीं होता है। तो option D इसका correct answer है, that is context switch time। Okay, which of the following need not necessarily be saved on a context switch? कौन सा जरूरी नहीं है? So general purpose registers तो होगा, translation, look aside buffer, program counter। So option B is the correct answer, it need not necessarily be saved। So option B हमारा correct answer है। ठीक है, translation, look aside buffer। A semaphore is a shared integer whose value does not drop below zero। ठीक है, below zero, negative में नहीं होगा। So option A इसका correct answer है, it is option A। Fine, आगे बढ़े। When high priority task is indirectly preempted by the medium priority task, effectively inverting the relative priority of the two tasks। So इस सिचुएशन को क्या भी बोलते हैं कि प्रायोरिटी इन्वर्जन हो गई है। प्रायोरिटी मतलब एक हाई प्रायोरिटी को एक मीडियम ने वो कर दिया, प्रीम्प्ट कर दिया, तो वो प्रायोरिटी इन्वर्जन बोलते हैं उस सिचुएशन को। फाइन, प्रायोरिटी इन्वर्जन। Restricting the child process to a subset of parents' resources prevent any process from overloading the system by using a lot of secondary storage, underloading the system by very less CPU utilization, overloading the system by creating a lot of sub processes। तो ये होगा आंसर। तब ओवरलोडिंग क्या होता है, बाय अ लॉट ऑफ सब प्रोसेसेस। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। A parent process calling dash system call will be suspended until children processes terminate। So obviously wait that we have already done, तो इसका आंसर होगा wait। option, okay, sorry, option A, that is wait। Okay, moving ahead, let's move ahead। In Unix, the return value for the fork system call क्या होती है चाइल्ड प्रोसेस के लिए, और फॉर पेरेंट प्रोसेस क्या होती है? फॉर चाइल्ड प्रोसेस इट इज अ 0, चाइल्ड प्रोसेस के लिए होती है 0। ठीक है, एंड इट इज अ नॉन जीरो, इट इज अ नॉन जीरो इंटीजर फॉर द पेरेंट प्रोसेस, 0 एंड अ नॉन जीरो इंटीजर फॉर द। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड के लिए इट इज 0। What is interprocess? We have done this, allow the processes to communicate and synchronize their action। तो option B correct answer हो जाएगा। So this we have done already।
इन द जीरो कैपेसिटी में मतलब उसकी कैपेसिटी ही जीरो है, ठीक है। तो एक तो बाउंडेड कैपेसिटी होती है और एक और होती है, उन दोनों को बोलते हैं ऑटोमेटिक कैपेसिटी बफर्स। और जो ये है जीरो कैपेसिटी में, द सेंडर कीप सेंडिंग एंड द मैसेजेस डोंट वेट, क्यू में वेट नहीं करेंगे, द मैसेज सेंडर कीप्स ऑन सेंडिंग एंड द मैसेजेस डोंट वेट, ओके, इन द जीरो कैपेसिटी क्यू। और बाउंडेड कैपेसिटी में एक अलाउड, हाँ, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड कैपेसिटी क्यूज आर रेफर्ड टू एज द, क्या बोला मैंने, ऑटोमेटिक बफरिंग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। इज इट फाइन? रिमोट प्रोसीजर कॉल क्या होते हैं? फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेसेस रिमोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, फॉर कम्युनिकेशन टू बिटवीन टू प्रोसेसेस ऑन द सेम सिस्टम ऑन सेपरेट सिस्टम। तो इसमें क्या होगा? रिमोट प्रोसीजर कॉल कम्युनिकेट, सेम में तो नहीं होगा, इट इज नॉट बिटवीन द, तो अगर सेपरेट सिस्टम है तब हमारा ऑप्शन सी, दैट इज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेसेस ऑन सेपरेट सिस्टम। ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ये सी ही है, ठीक है, सी इज द आंसर। व्हाट इज द स्टब? स्टब क्या है? इट ट्रांसमिट्स द मैसेज टू द सर्वर, हाँ सर्वर में ही होता है, वेयर द सर्वर साइड स्टब रिसीव्स द मैसेज, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। It packs the parameters into a form transfer, yes, and it locates the port on the server. So yes, all of the above mentioned is the correct answer for the stub. ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। एंड देन व्हाट आर वी डूइंग टू रिजॉल्व the problem of data representation on different system RPCs? define machine dependent representation, तो ऑप्शन सी होगा, machine independent representation होगा, तभी तो डेटा रिप्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, है कि नहीं? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। A process that is based on IPC mechanism, ठीक है, and which executes on different system, ठीक है, and communicate with other process using message based communication is remote RPC, that is remote procedure call, or it is based on the inter-process communication only. What is an interrupt vector? It is an address that is indexed to an interrupt handler. It is a unique device number that is indexed by an address. It is a unique identity given to an interrupt. So what is it? That is, it is an interrupt vector is an address that is indexed to an interrupt handler. ठीक है, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, इंटरप्ट वेक्टर एड्रेस है। इन अ मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट द सीपीयू यूजेस पोलिंग, नहीं, the CPU writes one data byte to the data register and sets a bit in the control register to show that a byte is available. तो मेमोरी मैप्ड में तो पोलिंग नहीं यूज होता है, इट यूजर्स राइट्स वन डेटा, ठीक है, सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, मेमोरी मैप्ड का, ठीक है। इन द लेयर्ड अप्रोच ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो कौन सा वाला, हाईएस्ट लेयर या लोएस्ट लेयर, क्या होता है? हाईएस्ट इज द हार्डवेयर, हाईएस्ट लेयर इज द हार्डवेयर, ठीक है, हाईएस्ट इज द, नहीं, क्या पूछा? इन द लेयर्ड अप्रोच द, नहीं, हाईएस्ट लेयर एन तो यूजर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए होता है, तो हाईएस्ट लेयर विल बी द यूजर इंटरफेस, ओके। इन द लेयर्ड अप्रोच में द हाईएस्ट लेयर ऑब्वियसली कर्नल अंदर एंड हाईएस्ट लेयर इज द यूजर इंटरफेस, सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रोसेसेस आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, तो इन अ मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, जिसमें डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइडेड है। इन अ मल्टी लेवल फीडबैक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, a process can move to a different classified ready queue. Classification of the ready queue is permanent. Processes are not, processes are, abhi to padha ki processes are classified into groups, so a process can move to a different classified ready queue, ye iska correct answer hoga, and processes can be classified into groups, okay. A process is selected from the dash queue by the dash scheduler, ab batao, a process is selected from which queue? ready queue, ready queue से कौन select करता है? the short term scheduler, ठीक है, ready queue तक लाता है लॉन्ग टर्म और ready queue से शॉर्ट टर्म शेड्यूलर लाता है फॉर गेटिंग एग्जीक्यूटेड, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है।
What is dispatch latency? The speed of dispatching a process. नहीं, process from running नहीं. अच्छा, ये option C, the time to stop one process and start running another one, that is the dispatch latency. Option C will be the correct answer to the question. And then what is waiting time? It is the total time which is spent in the ready queue, yeah, in the running queue. So obviously in the ready queue. Waiting time in the ready queue. कितना time लगा in the ready queue? That is the correct answer. Okay, under multi-programming, in multi-programming, turnaround time for short job is usually shortened, and that for long job, the shortened or for the short job it will be shortened, and for the other it will be length. Then options B is the correct answer. होगा. Yes. And let us do for what is the most optimal scheduling. Optimal में short job first, option B आता है. Short job first इसका correct answer होगा. What are spin locks? Spin locks क्या है? CPU cycles wasting lock over critical section of the program, locks that avoid the time wastage in context switches, or locks that work better on multi processes. तो इसमें option B है correct answer. Spin locks are the locks CPU cycle wasting lock over the critical section, locks that avoid the time wastage, and locks that work better with the locks that work with multi processor. So yes, option B है इसका correct answer. ठीक है? So these were the important questions which is very very important for your exam. ऐसे ही sections आते रहेंगे for your exam, for your TGT and PGT computer science exam. अगर तुमको detail में sessions चाहिए तो do let me know in the comment section, and don't wait for the last moment कि last moment होगा हम तैयारी शुरू कर देंगे. That will not work. So let's hope we meet again soon. Till then, like, share and subscribe और motivate करना बिल्कुल भी ना भूलें. So thank you everyone and God bless. Bye bye.